अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, इस डिवाइस का नाम है OnePlus Ace 2। आइए अब हम इस डिवाइस की डिटेल में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। OnePlus Ace 2, released 2023, the 13th of February, 204 gram, 8.7 mm thickness, Android 13, colors 13 to 56 gigabytes, 512 gigabyte storage, no card slot, 6.74, 1240 times 2772 pixels, 50 MP, 2160p, 12, 16 gigabytes RAM, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 5000 mAh LiPo network technology, GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G LAUNCH, announced 2023, the 7th of February. Status available. Release 2023, the 13th of February. BODY dimensions 163.4 times 74 3 times 87 millimeter, 6.43 times 293x034 in. Weight 204 grams, 7.20 ounces. Build glass front, Asahi glass, aluminum frame, glass back, Gorilla Glass 5, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby display type AMOLED, 1B colors, 120 Hz, HDR10 plus, size 6.74 inches, 109.2 square centimeter, approximately 90.0% screen to body ratio, resolution 1240 times 2772 pixels, 29 ratio, approximately 451 ppi density. Protection: Asahi glass platform, OS Android 13, colors 13, chipset Qualcomm SM8475, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4nm, CPU octa-core 1x 3.19 GHz Cortex-X2 and 3x2.75 GHz Cortex-A710 and 4x 1.80 GHz Cortex-A510. GPU Adreno 730. Memory card slot, no internal. 256 GB, 12 GB RAM, 256 GB, 16 GB RAM, 512 GB, 16 GB RAM. UFS 3.1 main camera, triple 50 MP, f1.8, 24mm wide, 1.56, 1.0 MP DAF/OIS, 8 MP, f2.2, 16mm, 120, ultra-wide, 14.0, 1.12 M2 MP, f2.4, macro. Features: LED flash, HDR, panorama video, 4K 830, 60 fps, 1080p 830, 60, 120, 240 fps. Euro eyes selfie camera, single 16 MP, f2.4, 26mm wide, 13.09, 1.0 M. Features: HDR video, 1080p 830 fps. Sound loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5mm jack, no 24-bit, 192 kHz audio comms, WLAN Wi-Fi 802.11a, B, G, N, AC, 6, dual band Bluetooth 5.3, a 2dp, LE positioning, GPS, L1 plus L5, GLONASS, G1, BDS, B1I plus B1C plus B2A, Galileo, E1 plus E5A, QZSS, L1 plus L5, NFC yes, SA, HC infrared, port yes, radio no, USB Type-C, 20 FE8 URES sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum. Battery type LiPo 5000 mAh, non-removable charging, 100W, wired, 100% in 25 minutes. Advertised MISC colors: black, glacier blue. Models: PHK 110. Price about 390 EUR.
अब हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को डिटेल में देखते हैं, साथ में इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, कैसी स्पेसिफिकेशन दी गई है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। जो स्क्रीन साइज़ दिया गया काफ़ी अच्छा दिया गया, इसमें 6.74 इंच स्क्रीन साइज़ दिया गया। जो इसकी स्क्रीन की बॉडी रेशियो वो भी काफ़ी अच्छी दी गई और PPI डेंसिटी 451 PPI डेंसिटी दी गई है इसमें। और स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी दी गई है। जो इसके पिक्सल हैं 1240 मल्टीप्लाई बाई 2772 पिक्सल दिए गए इसमें। काफ़ी अच्छे पिक्सल देंगे आपको इस डिवाइस में। कलर कम्बिनेशन अच्छा देखने को मिलेगा और पिक्चर्स की रेजोल्यूशन भी अच्छी मिलेगी देखने को। अगर कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ कैमरा लगाया गया, जो आपकी पिक्चर्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इसमें। अगर डे लाइट में आप पिक्चर्स बनाते हैं आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्वालिटी मिलेगी और कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। उसमें आपको ब्राइट कलर मिलेंगे और पिक्चर्स की जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी और आप इस डिवाइस से पिक्चर्स और बहुत अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। और देखा जाए तो इसमें आपको अगर नाइट मोड में बनाते हैं आपको थोड़े से कलर्स डिम मिलेंगे, लेकिन अगर साय वाली जगह पर बनाते हैं डे लाइट में साय वाली जगह पर बनाते हैं तो आपको वहाँ भी कलर्स काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन नाइट मोड में आप कलर्स थोड़े से कंप्रोमाइज़ मिलेंगे आपको और डार्कनेस मिलेगा कलर्स में आपको पिक्चर्स के, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर्स आपको देखने में मिलेगी इसमें। और अब हम रैम की बात करें तो ये 2 रैम के वेरिएंट में आता है, 12 GB और 16 GB। जो 12 GB वेरिएंट वाला डिवाइस है वो आपकी डिवाइस की स्पीड को बहुत अच्छा बना देगा। आपकी डिवाइस की स्पीड को अच्छा बनाने में हेल्प तो करेगा, साथ में आपकी अगर आप इसमें अगर गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसके ग्राफिक्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे और इसकी स्पीड भी अच्छी देखने को मिलेगी। और इस डिवाइस में आपको 16 GB रैम भी मिलेगी। जो 16 GB रैम है आपकी डिवाइस की और स्पीड अच्छी बना देगी। इससे आपको आपकी स्पीड एक बेहतरीन स्पीड मिल सकती है इसमें। और आप अगर गेमिंग वगैरह और वीडियोज़ बनाते हैं उसमें भी आपको आपकी डिवाइस जो बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी इसमें। और जो इसमें स्नैपड्रैगन 8Gen+1 लगा हुआ है चिपसेट, वो आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा बना देगा। काफ़ी अच्छा चिपसेट लगा हुआ है, लेटेस्ट चिपसेट लगा हुआ है इसमें। और बात करते हैं इसकी जो बैटरी की, तो इसमें जो बैटरी लगी हुई है इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है, जो आपकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देने वाली है। अगर आप इस डिवाइस में गेमिंग वगैरह करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं तो इसमें आपको बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे मिल सकता है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो 1 दिन मिलेगा। और इस डिवाइस में काफ़ी अच्छी इस डिवाइस में स्पेसिफिकेशन दी गई है। रैम बहुत अच्छी दी गई है, बैटरी बहुत अच्छी दी गई है इसमें। जो इसमें एंड्रॉयड आता है वो 13 और कलर्स 13 आता है। जो इसमें स्टोरेज है वो भी बहुत बेहतरीन दी गई है, 256 GB स्टोरेज है, 512 GB स्टोरेज। जो इसका वेट है 24204G वेट है। इसकी जो थिकनेस है 7.4 mm थिकनेस दी गई है। आपको ये डिवाइस काफ़ी स्लिम और स्मार्ट मिलने वाली है, लेकिन इतना इसका वेट नहीं लगेगा आपको डिवाइस का। काफ़ी कम वेट है इस डिवाइस का। और ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी स्टाइलिश डिवाइस में रहेगी। काफ़ी सारे कलर कम्बिनेशंस में अवेलेबल है, ये 3 कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में। और अगर देखा जाए इसमें जो कार चार्जिंग केबल मिलती है 2.0 OTG केबल मिलती है और 100 वाट के चार्जर से आप 25 मिनट में 100% चार्जिंग कर सकते हैं। और इसमें 3.5 जैक आपको नहीं देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा इसमें, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। ओवरऑल एक डिवाइस अच्छी डिवाइस दी गई इसमें, जो जिस प्राइस रेंज में दी गई बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है इसमें। पर ये नए और स्टाइलिश अंदाज में बैक साइड पे कैमरा पुट किया गया, साथ में LED फ्लैश भी दी गई और बैक साइड पे जो वन प्लस की ब्रांडिंग भी की गई है। जो इसकी साइड देखेंगे तो काफ़ी स्लिम और स्मार्ट साइड्स हैं। आपको काफ़ी अच्छी डिवाइस मिलने वाली है देखने में और मार्केट में ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस है। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।